class 10 acid bases and salts continuation of chapter. Okay, fine students, let's start today's live session. Okay, yes, hi. See, uh, today's session what we are going to study means what do all acids and bases have in common. Okay, acids and bases, what they are having common, students. So let's see some points, important points are there. Let's see one by one. Let's discuss. All acids have H plus ions in the common. See, yesterday I have told you that pH scale 0 to 14. 7 is neutral. So 0 to 6 is acid. 8 to 14 is base. This is pH scale, students. So all our acids have H plus ions in common. So I have told you in the last class, if hydrogen is increasing, if hydrogen are present, those are known as acid, students. Okay, so 0 to 6, what will be there? Hydrogen ions will be there. What do you mean by ions? Example, you take HCl. This acid, when you put in water, so what happens? H plus and Cl minus, they will separate. Hydrogen and chlorine, they will separate. Those are called as ions. So in acid, what the main thing is very important? H plus ions, students. H plus ions. Is it clear? So all acids have H plus ions in common, that is hydrogen will be common, students. They will be present. If 6 number is there in pH scale, hydrogen H plus ions will be there, less number. If 1 number is there in pH scale, H plus ions are more in number, students. Hydrogen ions are more in number, means it is acidic. So acid will increase this side, 6, 5, 4. So it will increase, students. 0 is very highly strong acid. More H plus ions will be present. Is it clear? So this is the first point which is in all acids and bases have in common. The second thing, acids produce H plus ions in solution, students. If only acid is present, pure acid is present, okay, they are in combined state. When you put in solution any water, at the time they produce H plus ions, students. H plus ions. And these H plus ions in solution which are responsible for their acidic properties. So if H plus ions are present, then it is acidic, students. Is it clear? Fine. Now all bases, what they are having in common? Duster, please. Bag, inside the bag. Okay. What all the bases have in common, students? Bases have common, generally they are OH minus ions. That is known as hydroxyl ions. Okay. Are you getting? OH minus, it is also known as hydroxyl. Fine. Now let us take one example, students. If NaOH is there, so this OH will become separate. Hydroxyl ions will be separating in where? In bases. Are you getting my point? See here. So all bases, what they are having common, students? OH minus ions, hydroxyl ions. Water is there, we are adding NaOH. So they will separate Na plus OH minus, ions will be separating in here in solution form.
Is it clear? So that's same thing they are telling here. All the bases have hydroxyl ions. So by these above statements, what we can conclude for easy understanding, this one we have to conclude, students, here. Okay, see here, acids, they contain H plus ions, hydrogen ions, bases OH minus, hydroxyl ions. All acids have H plus ions and all bases have OH minus ions. You have to remember this one. Okay. So now the next point, acids or bases in water solution. If we add to the water acid or bases, what happens, students? See, H plus ions means acid. When we add to the water, what happens? H3O plus will form. What is this H3O plus? So this is known as hydronium. What is this? H3O plus is known as hydronium. See, example also they have given here. HCl. What is HCl, students? Acid. Which acid is present? Hydrochloric acid. When you add acid to the water, at the time what happens? Hydronium will form. This H2 is there, na? They will combine with this one. So H3O will form. This one. This H2O will combine with hydrogen and it will form H3O plus, hydronium. And remaining chlorine will be separated, Cl minus. So in this reaction, what we have concluded, when we add acid to the water solution, hydronium will form. Acid, water, hydronium and chlorine is separated. Okay, fine, clear. When bases are dissolved in water, what it will form? OH minus ions will form, hydroxyl. See, hydroxyl ions, OH minus. So let's take two examples and we will understand. NaOH. What is NaOH? Base it is. Because OH is there, na? Base. Which base it is? Sodium hydroxide. When we add sodium hydroxide to the water, what happens, students? This Na will become separate and OH will become separate, students. They will form into ions. Base, when you are adding to the water, okay, so these ions will get separated. Na plus plus OH minus. So this is the product. This is the result. This is the base when you are adding to the water. Are you getting my point? Let's take another example. MgOH2. What do you mean by MgOH2, students? It is magnesium hydroxide. What is NaOH? Sodium hydroxide. Both are bases only here. Sodium hydroxide is also base. MgOH twice. How we have to pronounce this one? MgOH twice or MgOH2. OH hydroxide, Mg magnesium, magnesium hydroxide, it is a base. NaOH, sodium hydroxide. Actually bracket is not there. For your understanding purpose, I have written here. They will become separate. Is it clear? NaOH. So always we have to write N capital, A small letter, again O capital, and again we have to write capital H, sodium hydroxide. So this is sodium hydroxide. When you add to the water, they will be get separated ions, Na plus OH minus. Okay, because we have seen bases are having hydroxyl ions. So bases are having hydroxyl ions when we add to the water. Another base is there. Which base is there? MgOH2 means magnesium hydroxide. What we are doing? We are adding water to the base. What happens? They will get separated. Mg2 plus. See, Mg2 here 2 is there now. So magnesium 2 plus ions plus
two OH minus ions. OH will get separated, hydroxyl will get separated. All bases have OH minus, that is hydroxyl ions. Clear? So next students, let's continue. See here, by seeing this experiment you can understand. So magnesium hydroxide, yes, see here, are you getting? See here, so this is magnesium hydroxide in a test tube. Water and base is added. Which base is added, students? Here magnesium hydroxide. Are you getting? Clear? Fine. So let's continue here. Some bases are soluble in water, students. Some, not all bases will dissolve in water. Some bases will dissolve in water. So those substances are called as alkali. What do you mean by alkali? Very important. Alkali. So bases, when they are soluble in water, they are called as alkali. All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. This one also you have to keep in your mind. Some bases they are dissolving in water. थोड़े bases जो है पानी में मिल जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? alkalis कहते हैं. सभी अल्कलीस क्या है? बेसिस है. लेकिन सभी बेसिस क्या है? अल्कलीस नहीं है, क्योंकि थोड़े बेसिस है ना पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है. दोज आर नॉन अल्कलीस. गॉट इट? क्लियर? हाँ. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लैबोरेटरी, इन केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट्स. ओके, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, हम अभी क्या कर रहे हैं समझो. अभी मैं आपको इजीली समझा देता हूं. कर्ड पैकेट है. कर्ड क्या है? कर्ड. इसको हम क्या बना रहे? छाछ बना रहे. बटर मिल्क. वी आर मेकिंग बटर मिल्क. सो व्हाट वी हैव टू ऐड टू द वाटर? सॉरी, कर्ड. वी हैव टू ऐड, स्टूडेंट्स, वाटर. वी हैव टू ऐड. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ? ನೀರು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟರ್. So this is called as dilute. Buttermilk. What is buttermilk, students? Dilute. And this curd is concentrated. So हम concentrated को क्या कर रहे हैं? हम लोग dilute कर रहे हैं. Buttermilk क्या है? पानी ज्यादा रहता है ना. कर्ड रहता है लेकिन उसके अंदर पानी ज्यादा रहता है. सो उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं. कर्ड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है एसिड, उसको हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं. अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको. While diluting acids, because in laboratory students some dilute HCl, okay, dilute sulfuric acid will be available. How this dilute sulfuric acid will be there available? Because they are adding water to the acids, then it will become dilute. Clear? हम जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, वो क्या रेकमेंड करते हैं? द एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर. स्टूडेंट्स, हम लोग है ना, वाटर को है ना थोड़ा सा एसिड डालना चाहिए. एसिड को डायरेक्ट वाटर डाल दिए तो क्या हो जाता है? देखेंगे. अभी रुको. व्हाट दे आर रिकमेंडिंग, व्हाट द केमिस्ट्री और केमिस्ट्री टेक्नीशियंस और केमिस्ट्री lecturers, teachers, what chemistry is telling students, what we have to do? It is recommended that acid should be added to the water. पानी है, पानी के अंदर थोड़ा ड्रॉप एसिड छोड़ना चाहिए. कैसे छोड़ना चाहिए? एक कॉर्नर से छोड़ना चाहिए. हम लोग इधर लगा के थोड़ा सा
एकदम एसिड नहीं डालना चाहिए. एसिड इज वेरी डेंजरस. इफ यू टेक acid and if you put water, suddenly it will become what? Reaction, students. There will be a what? Dangerous it is. It will affect our body. See here, now you will understand. So what we have to do? We have to add acid to the water, not water to the acid. पानी को एसिड नहीं मिलाना चाहिए. क्या करना चाहिए? We have to add acid to the water, not water to acid. एसिड को पानी नहीं डालना चाहिए, पानी को एसिड डालना चाहिए. समझ में आ रहा है? ओके, फाइन. So acid should be added to the water and not water to the acid. Why? Because the process of dissolving acid or base in water is highly exothermic. फटक से ज्यादा हीट रिलीज कर देता है, रिएक्शन हो जाता है, वो डैमेज भी हो सकता है, हमारे बॉडी को भी डैमेज कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है. इसलिए हम इधर देखो, ये इमेज में आप समझ में आ सकता है. पानी है ना, एसिड को नहीं एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए. वेरी डेंजरस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इफ इन योर एग्जामिनेशन इफ दे आस्क, यू हैव टू राइट दिस आंसर. व्हाई? It is recommended that acid should be added to the water because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic. Exothermic मतलब क्या है? जो हीट प्रोड्यूस कर देता है, रिएक्शन होके हीट ज्यादा निकल जाता है, रिएक्शन होके ब्लास्ट भी हो सकता है. So in this image what you can conclude, students? एसिड को है ना पानी के अंदर डालना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप. See students, it is a beaker. Suppose you think this is a beaker. So water is present. We have to add water in this one. So it is measurement 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. So how much we want? We have to add water. एसिड को है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग डालना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप. अगर सडनली हम पानी को एसिड में डाल दिए तो क्या हो जाता है? आग लग सकता है, रिएक्शन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है. इट इज वेरी डेंजरस. ओके, आर यू गेटिंग? फाइन. सो some questions we are going to solve now. What is neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है? The reaction of an acid and a base to form salt and water is called neutralization reaction. समझ में आ गया? ओके, क्लियरली मैंने आपको बता दिया है विथ एग्जाम्पल, विथ फोटो. ओके, फाइन. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन Z आ सकता है, यस आ सकता है, इसलिए मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? The reaction of an acid and base to give salt and water. ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड base to form salt and water is called neutralization reaction. And you have to write example, students. Example number 1, HCl acid है, this is acid, and NaOH. What is NaOH?
It is base, students. So this is acid. So this is base. What will form? This Na will combine with Cl. NaCl, salt plus water, H2O. This is salt and this is water. Definition you have to write and reaction you have to write, students. Then you will get full marks. If you want to write another example, you can add, students. H2SO4. What is H2SO4? Sulfuric acid it is. And you are combining with what? Base, potassium hydroxide. Sulfuric acid, potassium hydroxide. क्या हो जाता है? ये पोटेशियम है ना, सल्फेट के साथ मिल जाता है, स्टूडेंट्स. सो क्या हो जाता है? K2SO4 will form, students, and water will form, students. So this is both are examples for what? Neutralization reaction. Neutral, ये जो है साल्ट जो है न्यूट्रल है, नाइदर एसिड नॉर बेस. कब होता है? कब? जब एसिड एंड बेस दोनों मिल जाता है, जो होता है वो है न्यूट्रल हो जाता है साल्ट, और वाटर भी फॉर्म होता है, स्टूडेंट्स. एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर. So this is an examples for neutralization reaction. What do you mean by neutralization reaction? When the reaction of an acid and a base to give salt and water. Acid, base, salt and water. Neutralization reaction example. Hydrochloric acid, sodium hydroxide base, neutral salt, sodium chloride and water. Sulfuric acid, potassium hydroxide, K2SO4, potassium sulfate it is. What it is? Potassium sulfate. This is potassium hydroxide, potassium sulfate, and water will form, students. Is it clear? Understood, everybody? So this question is very, very important. What is neutralization reaction? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन. सम कमेंट्स आर कमिंग हियर. सर एंटासिड का रिएक्शन बताओ सुभाष. सुभाष, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन. सो जस्ट ए मिनट. एंटासिड मतलब क्या है, पहला वो हम लोग समझेंगे. अभी जब भी हमको है ना एसिडिटी हो जाता है, जब भी एसिडिटी हो जाता है, हम लोग टैबलेट्स लेते हैं जो दुकान में मिल जाता है. एंटासिड हमारे बॉडी के अंदर एसिड हो जाता है. एंटासिड ले लिए तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल कर देता है. अंदर एसिड, एंटासिड में बेस रहता है. व्हाट विल बी प्रेजेंट? बेस विल बी प्रेजेंट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. So wonderful question has been asked by Subhash. Thank you so much for your questions, Subhash. Okay, हमारे स्टमक के अंदर एसिड हो जाता है. हम जो टैबलेट लेते हैं वो क्या लेते हैं? बेस लेते हैं. सो बाद में क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है. वो क्या होता है, कैसा होता है? लेट्स सी हियर. हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है? एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बिकॉज आवर स्टमक इज देयर ना, हियर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है, स्टूडेंट्स. एक गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है. एंटासिड के अंदर क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, स्टूडेंट्स. हम जो टैबलेट लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस हो जाता है. जब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रल हो जाता है, कैसा हो जाता है? ये Mg है ना, एक क्लोरीन के साथ मिलजुल के मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है. बाद में क्या हो जाता है? थोड़ा सा पानी बन जाता है. सो इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ. Mg1 Mg1. ओके, फाइन, क्लियर. इज इट क्लियर, सुभाष?
सो हमारा पेट के अंदर एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो गया तो हम लोग टैबलेट लेते हैं, उसके अंदर बेस रहता है एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विल फॉर्म, न्यूट्रल विल फॉर्म एंड वाटर विल फॉर्म स्टूडेंट्स। ओके, सुभाष आपको समझ में आ गया लगता है मुझे, थैंक यू सो मच। यस, वंडरफुल सुभाष, so thanks for asking a beautiful question. Next I want to solve one more question students, okay, for your better understanding. Okay, अभी क्या क्वेश्चन क्या है, फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क का जो पीएच है 6 है। व्हाट स्टूडेंट्स, फ्रेश मिल्क का जो पीएच है 6 है। 6 मतलब क्या है, एसिड। फ्रेश मिल्क उसका जो पीएच है 6 है, वो क्या है, एसिडिक है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। पीएच चेंज होता है मिल्क कर्ड होने के बाद, कर्ड होने के बाद उसका पीएच चेंज हो सकता है, डेफिनेटली इट विल चेंज। pH will decrease students, this pH will decrease, it will become 5 or 4 because curd is sour in taste। सोर मतलब क्या है, ज्यादा सा खट्टा हो जाता है। मिल्क से ज्यादा खट्टा क्या होता है, कर्ड होता है। जो जब भी खट्टापन इंक्रीज होता है उसके अंदर जो पीएच है ना डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। दिस इज द आंसर, सो दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। ओके, ये कर्ड होने के बाद उसका पीएच चेंज हो सकता है क्या पूछ रहे, डेफिनेटली इट विल चेंज, it will decrease, pH will become less। Yes Subhash, lactobacillus fermentation, wonderful Subhash, thank you so much for your, I think Subhash, from where you are observing this live session, please comment the place। Okay, so beautiful, 2 questions has been answered by one question has been asked by the Subhash and second he reacted here। so जब भी मिल्क को है ना हम कर्ड बना देते हैं, क्या हो जाता है, वो मिल्क से भी खट्टापन ज्यादा हो जाता है। ओके, सो उसका पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है। सुभाष, यू आर फ्रॉम विजयपुरा, वेरी गुड, सॉरी कर्नाटका। ओके, थैंक यू so much। So today we are going to end this live session. Tomorrow we are going to continue the chapter. Don't miss daily half an hour 7:30 p.m. watch, so definitely you will succeed in class 10 chemistry and biology. I am going to help you. Thank you so much. Keep watching, keep learning students. Take care. Bye bye.